Hello everyone, once again, welcome on this digital platform. I am Yogesh Yadav, Assistant Professor in Botany, Department of Higher Education, Haryana. This is our second lecture, and also for the second year BSc first year students, it means for the second semester students. Today we will discuss the life history of an important fungi that is named as mucor. So first of all, we are taking an outlook how we will study this particular life history. So first of all, we will start this particular life history of this mucor with the systematic position. Systematic position, or you can say that classification of this particular organism. Classification. As you know very well that first of all, again, and this first of all you can say that we will start with the kingdom, and this particular kingdom, this one is fungi. Okay, after that the division, and according to Ainsworth's system of classification, it belongs to the division Eumycota. Subdivision Zygomycotina. Class Zygomycetes. Order Mucorales. Family Mucoraceae, and finally genus, and this particular genus, this one is mucor. And if you're talking about the distribution of this particular organism, we can say that particular about this mucor species, that is existing about 150 species, and overall out of which 17 species they are dominant in India. और इनमें से जो 17 जो स्पीसीज हैं वो कहां पे अवेलेबल है भाई? इंडिया के अंदर डोमिनेंट फॉर्म के अंदर अवेलेबल है. So out of these 17 species, some of the common one, that is the Mucor mucido, Mucor flavus, Mucor pusculus, okay, Mucor prunei, Mucor indicus, and Mucor himalis. So these are the various species which are generally present. Generally these fungi, they are named as beta molds. ये जो fungi है, इन fungi को हम क्या बोलते हैं? Molds बोलते हैं. And out of this Mucor mucido, this one is the common, or for which we have to study the life history. This Mucor mucido, this one is also named as black mold or dung mold. हम इसे ब्लैक मोल्ड भी बोलते हैं और डंग मोल्ड भी बोलते हैं भी, ड्यू टू ऑफ देयर हैबिटेट, बिकॉज दीज फंजाई दे आर कॉमन ऑन ब्रेड, डंग और अदर मटेरियल ऑन विच दे आर एग्जिस्ट, जहां पे ये क्या कर सकती है भाई? एग्जिस्ट कर सकते हैं. तो आफ्टर द बेटा सिस्टमेटिक पोजिशन, तो वी हैव टू स्टडी सिस्टमेटिक पोजिशन के बाद वी हैव टू स्टडी द लाइफ हिस्ट्री. And this life history we will study in the various forms. Out of these, some of these are, first of all we will study the vegetative structure. After that we will study the reproductive structure, and this reproductive structure, first of all we will study the vegetative reproduction, then we will study the asexual reproduction, and then we will study the सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो तीन तरह के रिप्रोडक्शन हम क्या करेंगे इसके अंदर? स्टडी करेंगे. तो these are the four phases in which we have to divide this particular genus according to their life history.
So first we will start with the vegetative structure. If we start with the vegetative structure, so this particular genus or this particular organism, the plant body, that is thallus, and the thallus of this particular organism is one named as mycelium. क्या कहलाता है? Mycelium कहलाता है. And you know that this particular mycelium, that is consisting of assemblies of various hyphae. बहुत सारे हाइफे होंगे जिनकी असेंबलेंस के कारण एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बनेगी, एंड दैट पर्टिकुलर नेटवर्क स्ट्रक्चर, दैट वन इज नेम्ड एज माइसीलियम. एंड द माइसीलियम ऑफ दिस पर्टिकुलर म्यूकर, दिस वन इज सिनोसिटिक. कैसा होगा ये? सिनोसिटिक होगा, ब्रांच्ड होगा. ठीक है, सिनोसिटिक, ब्रांच्ड, एसेप्टेट, filamentous, and the main thing is that without rhizoid. ये ध्यान रखना है भी आपको. This one is the important thing, without rhizoid. तो जो rhizoids होते हैं ये present नहीं होते, because these are present with the another fungi which is similar to the mucor, that is rhizopus. वहां पे आप लोग क्या देखोगे? वहां पे आप लोगों को राइजोइड्स मिलेंगे, लेकिन यहां पे जो राइजोइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होंगे. तो इट मींस फिलामेंटस. तो इफ यू आर सी दिस पर्टिकुलर डायग्राम, then you are seeing that there are present these hyphae, and these hyphae beta that have multinucleate condition. This multinucleate condition, this one is named as सिनोसिटिक. साथ साथ में you are able to see that there are various branches of this particular hyphae. इस hyphae की various branches क्या है अभी present है. तो यहां पे आप देखोगे तो branch, तो hypha कैसा होता है अभी? branch होता है. The third thing is that बेटा aseptate. There is no septa, there is no cross link between these particular fungi. इस fungi के अंदर आपको कोई भी septa दिखाई नहीं देगा. Along with this one, there is a stage that is named as सिनोसिटिक stage. So you are see that Sino word that is used better for the assemblage, that is used for the multi. Though this condition that is used for multinucleate condition. So if the thallus is the multinucleate one, that's why we are saying that this particular mycelium is सिनोसिटिक one. कैसा है भाई ये? सिनोसिटिक है. ठीक है. Then come on to this one is about the better morphological structure. If you are talking about the internal structure, तो there is an enlarged view of this particular hyphae. Hyphae के अंदर क्या मिलेगा? आपको ये enlarged view दिखाया गया है डायग्राम के अंदर. Now you are able to see that there is the outermost thing, and you know that that's outermost. This one is cell wall. और आपको पता है the cell wall of this particular fungi that consisting of a pigment that consisting of an chemical that is named as chitin. और पॉलीमर जो होता है कौन सा होता है? काइटिन होता है. कंसिस्टिंग ऑफ ए पॉलीमर, एंड दैट पॉलीमर दैट इज नेम्ड एज काइटिन. इनर टू द सेल वॉल देयर इज प्रेजेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा दैट इज सिमिलर टू द टिपिकल यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्योंकि जो सेल्स हैं, द सेल ऑफ दिस पर्टिकुलर जीनस दे आर द यूकैरियोटिक वन, और जो फंजाई जो है दैट इज ए यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो मिलेगी वो भी कैसी मिलेगी? यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी. अलोंग विद दिस वन यू विल फाइंड द बेटा साइटोप्लाज्म. आपको क्या मिलेगा? साइटोप्लाज्म मिलेगा. इनसाइड द साइटोप्लाज्म यू विल फाइंड द वेरियस सेल ऑर्गेनेलीज. तो आपको क्या मिलेंगी? सेल ऑर्गेनेलीज मिलेंगी भाई. इनसाइड दीज सेल ऑर्गेनेलीज, the common cell organelles which are present in the eukaryotic system, which will also present in this particular case, that is mucor. वो आपको mucor के केस में भी मिलेंगी. तो अगर आप यहां पे देखोगे तो you will see the mitochondria, important one, that is mitochondria. You will see the endoplasmic reticulum, you will see the dictyosomes, you will see the nucleus. एंड द न्यूक्लियर स्टेज बेटा दिस वन इज द सिनोसिटिक वन. तो यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है. सो देयर आर प्रेजेंट मल्टी न्यूक्लियस, काफी ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, या आप इन्हें न्यूक्लियाई भी कह सकते हो. तो यू विल सी द न्यूक्लियाई. तो बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे? न्यूक्लियाई मिलेंगे. अलोंग विद दिस वन देयर इज another important feature which is associated with the structure of this particular mucor, that is in the presence of reserve food material. And the reserve food material in this particular fungi that is available in the form of glycogen.
किसकी फॉर्म के अंदर मिलेगा? ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर। अलॉन्ग विद ग्लाइकोजन यू विल फाइंड सर्टेन ऑयल ड्रॉपलेट्स, आपको कुछ एक ऑयल ड्रॉपलेट्स भी मिलेंगे, ठीक है। सो दिस वन इज द बेटा द स्ट्रक्चर, vegetative structure of this particular mucus, and that vegetative structure, उसकी morphology as well as internal structure both we have discussed one, ठीक है। Now beta come on to the second part, and this second part that is associated with the reproductive stage, or this is associated with the reproduction in case of fungi के reproduction की case की बात करते हैं हम। So if you are talking about the reproduction, so reproductively it will divide by three different ways, that is vegetative, asexual and sexual method. So as you know that in case of vegetative reproduction, a typical particular vegetative part that directly beta act as propagule, and this propagule by using the nutrients available in the environmental conditions, it directly leads to the germination of hyphae, and the hyphae leads to the formation of mycelium, and that is the thallus of this particular organism. So the vegetative reproduction, this one is only occur by means of a process that is named as fragmentation. So it is seen that fragmentation, okay, as the name indicate, fragmentation, that is the process of formation of various fragments by a typical hyphae or by mycelium, that is named as fragmentation, and each fragment have the ability to form complete mycelium, और हर एक जो फ्रेगमेंट है वो माइसेलियम की फॉर्मेशन कर देता है। द सेकेंड वन बेटा दैट इज नेम्ड एज एसेक्सुअल वन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज मेनली कैरिड आउट बाय प्रोसेस दैट इज नेम्ड एज स्पोरुलेशन, ओके, स्पोरुलेशन। तो टिपिकली बेटा दिस स्पोरुलेशन दिस अकर बाय मीन ऑफ मेन थ्री टाइप ऑफ स्पोर्स, तीन तरह के स्पोर्स बनते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर स्पोर्स, दे आर नेम्ड एज बेटा oidiospores. The second type of spores which are formed during the asexual reproduction, they are named as chlamydospores, and the third type of spores which are formed, they are named as sporangiospores. So three type of spores, they are produced in the life history of mucor during asexual reproduction. So first of all beta come on to the oidiospores. So these oidiospores are nothing but these are the thin walled spores without any reserve food material. It means they only survive for a short time. So as soon as they are formed, they directly beta germinate if favorable conditions they are present. The second type of spores which are named as chlamydospores. तो जो oidio जो spores होते हैं ये कैसे होते हैं? Thin walled spores होते हैं. In contrast to these oidiospores, Chlamydospores बेटा these are the thick walled spores. ये कैसे होते हैं? थिक वॉल्ड स्पोर्स होते हैं, और थिक वॉल है, थिक वॉल के साथ साथ क्या प्रेजेंट होगी? दे हैव रिजर्व फूड मटेरियल, इनके पास क्या होता है भाई? रिजर्व फूड मटेरियल होता है। सो दैट्स व्हाई बेटा दीज पर्टिकुलर स्पोर्स दे आर आल्सो हेल्पफुल इन पेरिनेशन। So these are along with act as reproductive body, they also act as perinating structures. तो दोनों तरह का काम किया जाता है किसके द्वारा? Chlamydospores के द्वारा। And the third type of spores बेटा they are named as sporangiospores. In case of sporangiospores, you will find that as you are able to see in this particular diagram, there are the some structures, and these some structures have the stalks, and these stalks बेटा they are named as sporangiophores, और ये stalks क्या कहलाती हैं? Sporangiophores कहलाती हैं। and these sporangiophores they have the ability to develop sporangium। क्या डेवलप करते हैं? sporangium डेवलप करते हैं। and these are the structures which are mainly responsible for the production of spores, they are named as sporangiospores. Okay, so these spores beta they are produced in very large quantity and they help in asexual reproduction. So this is the fast mean of reproduction. So generally it is seen that these sporangiospores they are the main spores which are produced in case of asexual reproduction, जो कि asexual reproduction के द्वारा क्या किए जाते हैं? प्रोड्यूस किए जाते हैं। As you are able to see in this particular diagram, this diagram is showing the development of sporangium. What happens initially when the hyphae that develops completely, after that or the presence of food material
is in abundance, then this particular hyphae beta that forming the vertical structures, stalk-like structures, and these vertical stalk-like structures they are named as sporangiospores. These sporangiospores initially they start bulging at their terminal end. After the bulging, this bulge that increases in size, and after attaining a particular size, because this particular one that have the beta two type of zones, this bulging structure have two type of zones. Inside the center there is a present central zone, and at the peripheral region there is known as poriferous zones, because the number of nuclei that is present in large at the peripheral region, that's why this particular peripheral layer or the peripheral zone have the abundance of nuclei, but the central zone that have the abundance of vacuoles. लेकिन जो सेंट्रल जो पार्ट जो है, दिस सेंट्रल पार्ट दैट हैव abundance of vacuoles, but this peripheral region beta that have abundance of nuclei. Okay, initially these vacuoles they start shifting towards the peripheral region, and they are forming a demarcation or they are forming a boundary. और एक बाउंड्री बनाना क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं. this region, this beta differentiating the sporangiophore with the rest of the sporangial wall, this one is named as cleft. और ये जो स्ट्रक्चर जो बनती है इसे हम क्या कहते हैं, cleft. So after the formation of cleft, it leads to the production of two type of zone. One is the sporangiferous zone and the another one is the columellar zone. This columellar zone that is associated with the sporangial part, and this sporangial part beta that forms septa, or it is now it's now break its connection with the hyphal wall or the mycelium. ये mycelium के साथ अपनी connections को क्या कर लेता है, break कर लेता है, and it forming a typical structure that is named as sporangium. Now this sporangium have the main zone that is the sporiferous zone, and this sporiferous zone is responsible for the production of sporangiospores. और ये किसकी प्रोडक्शन करते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स की प्रोडक्शन करते हैं. In this case, you are able to see that there are present multiple nuclei. These multiple nuclei beta, they also the division of the protoplasm. ये protoplasm के भी division को क्या करते हैं भाई, show करते हैं. And finally, each protoplasmic bit along with the nuclei, they are forming spores, and these spores beta they are named as sporangiospores. So at the time of maturity, what happens? This particular wall of this sporangia that have an important pigment and that is named as calcium oxalate. इसकी वॉल के अंदर इंपॉर्टेंट केमिकल प्रेजेंट होता है, दैट इज नेम्ड एज कैल्शियम ऑक्सलेट. तो इसकी जो वॉल जो होती है, द वॉल ऑफ दिस पर्टिकुलर मैच्योर स्पोरेंजियम that is rich in calcium oxalate crystals, and these calcium oxalate crystals beta they absorb water or they imbibe water. Actually they imbibe water. Due to the imbibition of the water, the cells of the calcium crystals which become large, and it causes the breakage in the wall of this particular sporangium, and finally all the spores they will come out from this break wall, and now they are available for the germination, and after germination they are forming the vegetative structure of this particular fungi. इस फंजाई की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर को क्या कर लेते हैं, हम ये डेवलप कर लेते हैं. सो दिस वन इज नेम्ड एज asexual part. The another thing is that after that the next one is the beta sexual reproduction. If you are talking about the sexual reproduction, so sexual reproduction in case of mucor, this is of a special type, and this special type beta that is named as isogamous. क्या कहलाती है, आइसोगेमी कहलाती है. तो यहां पे आप लोगों को जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो देखने को जो मिलेगी, दिस इज ऑफ स्पेशल टाइप, और दिस इज ऑफ अ टाइप दैट इज नेम्ड एज आइसोगेमी. क्या मिलेगी, आइसोगेमस टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगी. तो एज द नेम इंडिकेट आइसो, व्हाट डू मीन बाय आइसो? आइसो मीन्स सिमिलर, और गैमस the gametes, it means the gametes which will be produced during the sexual reproduction, they are of same type. That's why this particular reproduction, this is named as isogamous type. Now the another thing is that how these gametes are produced.
This is the on the basis of the fusion of gamete, what type of gametes they are fusing. Now the thing is that how these gametes are produced. The gametes which are produced in case of mucus, they are produced in a structure that is named as gametangium. क्या कहलाता है अभी वो? gametangium कहलाता है. Okay, now this gametangium, on the basis of formation of gametangium, the species of the mucor, they are classified into two different form. One is the beta homothallic and the another one is heterothallic. और दूसरी जो फॉर्म है वो कौन सी है? हेट्रोथैलिक. तो एक जो फॉर्म होती है वो होमोथैलिक होती है और दूसरी जो फॉर्म होती है वो कैसी होती है? होमोथैलिक फॉर्म होती है. तो सम ऑफ द स्पीसीज दे आर द होमोथैलिक वन एंड सम ऑफ द स्पीसीज बेटा दे आर द हेट्रोथैलिक वन. It means in case of homo, so this homothallic that consisting of two word, one is the homo and another one is the beta thallus. So it means the gametangium, both type of gametangium, क्योंकि gametangium जो होंगे कितने टाइप के होंगे? दो के होंगे, because there is sexual reproduction and the sexual reproduction that require two different sexes. So out of this one is the male and another one is female. एक तो क्या होगी? मेल होगी और दूसरी क्या होगी? फीमेल होगी. तो homo means same. It means both male and female gametangium they will be produced on the same mycelium. किसके ऊपर प्रोड्यूस होंगे? एक ही माइसीलियम के ऊपर क्या होंगे भाई? प्रोड्यूस होंगे. such type of species beta they are named as homothelic in concern with their sexual reproduction. किसके कंसर्न में भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंसर्न के अंदर. तो यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ म्यूकर टीनियस, homothelic species. But because we are studying the life history of Mucor mucido, that belongs to the beta heterothelic form. ये किससे belong करता है? Heterothelic form से belong करता है Mucor mucido. In this case, you will find that the male gametangium that will produce on a separate mycelium, the female gametangium that will produce on separate mycelium. वो क्या होगा? दूसरे mycelium से produce होगा. तो such form beta they are named as the heterothelic one. Okay, now the thing is that, so you can say that initially there is present mycelium. This mycelium at the time of reproduction, what it will do? It will form gametangium. What gametangium will do? It will form beta gametes. How these structures they are formed? This is very well elucidated by this particular diagram which is showing the stages in sexual reproduction. जो क्या शो कर रहा है भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर स्टेजेस शो कर रहा है. इनिशियली व्हेन द थैलस दैट बिकम रिप्रोडक्टिवली मैच्योर, it will start sexual reproduction. So starting of sexual reproduction that occurs by mean of beta some special hyphal branches or some part of the mycelium, they start beta coming to each other. एक दूसरे के पास आना क्या करती है? स्टार्ट करती है and they come to each other under the influence of diffusible hormone. It means they are producing some chemicals and that chemical beta that is named as diffusible hormone. So it means they are secreting some chemicals. The secretion or this chemical leads to the coming in contact of two different branches with towards each other, जो एक दूसरे की तरफ आती हैं, and these after coming in towards each other, now these branches beta they are named as zygophore. ये branches क्या कहलाती है? zygophore कहलाती है. Okay, after that what happens? These two different branches which are coming in contact, initially beta they are start enlarging. ये एनलार्ज करना क्या करती है? स्टार्ट करती है. एंड दे बिकम बल्बस एट देयर टिप एंड स्मॉल एट देयर बेस. नाउ दीज बल्बस स्ट्रक्चर्स दे आर नेम्ड एज gametangium. Okay, one of the gametangium beta that will be of plus strain and the another of the gametangium beta that will be of negative strain. Okay, why we say it plus or minus? Because in sexual reproduction we require two different sexes, one is the male and another one is female, but no such, we are saying that the gametes are iso, so there is no difference in the gametes, but they are beta they showing the difference in their physiology.
One of them is physiologically active, more active, another one is physiologically less active, and they are classified as plus strain और minus strain. हम इनको plus strain और minus strain कह देते हैं. अब जब हम gametes के लिए हम plus strain और minus strain यूज करते हैं, then we are saying the plus gametangium or minus gametangium. So don't confuse with the male and female and the plus and minus. Generally, in case of sexual reproduction, we are using male and female. But in case of this fungi, there is no sexual dimorphism. That's why there is no difference. Morphologically, there is a difference only in their physiology. That's why they are named as plus strain or minus strain. After that, when these gametangium beta they come in contact, they are showing an important phenomena that is named as planogametic copulation. Planogametic copulation. They show an important phenomenon, and this phenomenon beta that is named as planogametic copulation. It means these two different hyphal branches or gametangium, they will copulate, they will mingle up, and after mingling they will lose their individual identity. और इसके बाद अपनी individual identity को क्या कर देते हैं भाई, ये lose कर देते हैं. तो when they come towards each other, after that a part of this gametangium that is come in contact, and that part leads to the formation of septum towards their hyphal branches, sexual hyphal branches. At this stage, the rest of the part beta, now that is named as suspensor. क्या कहलाता है भाई, ये suspensor कहलाता है. ठीक है, तो initially there is a gametangium, actually this is progametangium, then beta there is a formation of gametangium, and after the formation of gametangium they lay down a wall. The tip part or the apical part that loses its connection with the rest of the part by forming a septa. Now the rest of the part of the hyphal branch that is named as suspensor. क्या कहलाता है, suspensor कहलाता है. Then both these tip they lose their individual identity and forming a structure, and this structure beta, this one is named as zygospore. And this zygospores that develop its wall. क्या develop कर लेता है, अपनी wall develop कर लेता है, and it develop a thick wall and undergo a period of rest. और फिर कहां चला जाता है, रेस्ट के पीरियड के अंदर चला जाता है. एंड एज द कंडीशंस बेटा दे बिकम फेवरेबल, इट स्टार्ट जर्मिनेटिंग. ये क्या कर लेता है भाई, जर्मिनेट करना स्टार्ट कर लेता है. तो दिस पर्टिकुलर स्पोर, you know very well that what happens, one of the nuclei that will coming from this plus strain, the another nuclei that will be coming from the another strain. तो कुछ एक न्यूक्लियाई तो कहां से आएंगे, प्लस स्ट्रेन के आएंगे, कुछ एक न्यूक्लियाई कहां से आएंगे, नेगेटिव स्ट्रेन के आएंगे भाई. फाइनली दीज टू डिफरेंट न्यूक्लियाई, वन ऑफ द प्लस स्ट्रेन, देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ पेयर. क्या बनेगा, एक पेयर की फॉर्मेशन बनेगी. यू कैन से दैट अभी हमारे पास इस तरह की स्ट्रक्चर है, और इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप देखोगे तो एक तो क्या आ गया, प्लस स्ट्रेन का न्यूक्लियाई, माइनस स्ट्रेन का न्यूक्लियाई, प्लस माइनस. तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे देयर विल बी फॉर्मेशन, देयर विल बी कमिंग टुगेदर ऑफ टू डिफरेंट न्यूक्लियाई, एंड दीज न्यूक्लियाई आर नथिंग बट बेटा दीज आर द गैमेट्स. और ये क्या होंगे, गैमेट्स होंगे. एंड ईच पेयर नाउ इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ जाइगोट. क्या बनाएगा भाई, जाइगोट बनेगा. ठीक है, दिस जाइगोट, ये भाई जो जाइगोट जो होगा, now it will form a complex zygote, and this zygote beta, this one is named as cynozygote. और ये जाइगोट क्या कहलाएगा, सीनोजाइगोट. तो जैसे सीनोसिटिक कंडीशन थी, तो जाइगोट भी कैसा हुआ, सीनोजाइगोट हुआ. इट मींस दैट हैव वेरियस डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स. इसके पास क्या होंगी, बहुत सारी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होंगी, अटिपिकल डिप्लॉइड स्ट्रक्चर. दिस सीनोजाइगोट, ये भाई जो सीनोजाइगोट जो होता है, दिस वन इज नेम्ड एज जाइगोस्पोर. क्या कहलाएगा भाई, ये जाइगोस्पोर्स होगा. एंड वोल जाइगोस्पोर बेटा दैट इज कवर्ड विद एक्सोस्पोरियम और एंडोस्पोरियम. इट विल बी कवर्ड विद टू डिफरेंट वॉल. आउटर दैट विल बी एक्सोस्पोर एंड इनर दैट विल बी एंडोस्पोर. तो आउटर तो क्या कहलाएगी, एक्सो कहलाएगी, और इनर क्या कहलाएगी, एंडोस. एक्सोस्पोरियम
and the inner one beta, that is endosporium. Two different wall, they will be separated by this particular structure that is named as zygospore, or you can say that cynozygote. क्या कहलाएगा भैया? cynozygote कहलाएगा. Okay, so it undergo period of rest when, but after coming the favorable conditions. भाई जैसे क्या आएंगी conditions favorable आएंगी, this particular zygospore that withers of its connection from the hyphal branches से अपना कनेक्शन क्या कर लेगा? विदर ऑफ कर लेगा. द वॉल ऑफ द बेटा द वॉल ऑफ द सिनोजाइगोट और द जाइगोफोर, और पर्टिकुलरली द एक्सोस्पोरियम वॉल दैट विल रप्चर. वो क्या होगी भाई? रप्चर हो जाएगी. द ईच एंड आउट ऑफ दिस वन, दीज वेरियस स्ट्रक्चर्स नाउ दे आर नेम्ड एज स्पोर्स. ये किसका काम करेंगे? स्पोर्स का काम करेंगे. एंड दैट स्पोर बेटा दैट बिहेव लाइक स्पोरेंजियोस्पोर. वो किसका काम करेगा भाई? स्पोरेंजियोस्पोर का काम करेगा. ईच स्पोर दैट विल फॉर्म वेरियस जर्म ट्यूब्स, और एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द जर्म ट्यूब्स दे विल फॉर्मिंग द माइसेलियम, विच इज द बेटा इनिशियल स्ट्रक्चर और द इनिशियल वेजिटेटिव पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वेजिटेटिव पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर फंजाई. तो इस फंजाई का क्या होगा? वेजिटेटिव पार्ट होगा. ठीक है. But sometimes what happens? Sometimes these two different branches, they are not able to come in contact. वो अपने contact के अंदर नहीं आ पाती. But still they showing a diploid structure, and that diploid structure instead of zygospore, that is beta that will be named as azygospore. क्या कहलाएगा वो? azygospore कहलाएगा. तो sometimes question is asked in your exam, what is the difference between zygospore and azygospore? So this azygospore beta that develops parthenogenetically. कैसे डेवलप होगा? पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप होगा. ठीक है. तो डायरेक्टली जर्मिनेट कर जाएगा बिना फ्यूजन हुए. तो माइसिलियम अगर कैसा है? हैप्लॉइड है, तो ये भी कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा. लेकिन ये जाइगोस्पोर जो बना ये कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा. ठीक है. तो बिफोर जर्मिनेशन, जब जर्मिनेशन होगा तो जर्मिनेशन से पहले ये जो स्पोर्स है, डिप्लॉइड जो स्पोर्स हैं, दे विल अंडरगो पीरियड ऑफ, दे अंडरगो मियोटिक डिविजन्स, दे अंडरगो मियोसिस. क्या शो करते हैं? मियोसिस शो करते हैं. एंड बिफोर जर्मिनेशन ईच स्पोर, ये जो स्पोर जो होता है दैट शो मियोसिस. क्या शो करेगा भैया? मियोसिस शो करेगा. तो इट विल प्रोड्यूसेस 4 स्पोर्स, 4 स्पोर्स बनेंगे. ठीक है. आउट ऑफ दीज 4 स्पेयर्स, that will depend on whether the particular organism is homothallic or heterothallic. Out of these 4, if the species is heterothallic one, 2 spore they will form the beta positive strains, and 2 spore they will be of negative strains. But if the condition is homothallic, all the spores beta are of same type. But in case of Mucormycido, the dung mold, there is some interesting phenomenon is that all the spores beta they are of same type irrespective. This is a heterothallic fungi. Fungi कैसी है भैया? heterothallic fungi है. ठीक है. But what happen in this case? Out of these 4 spores only one, एक जो spore होता है वो क्या करता है? survive करता है. Only one spore that survives, and other spores beta they will degenerate. And now this spore, ये भाई जो स्पोर जो होता है, दिस अंडरगो मियोसिस. क्या शो करेगा? सॉरी, माइटोसिस, एंड फॉर्मिंग मल्टीपल स्पोर एंड अटेनिंग सिनोसिटिक कंडीशन. और क्या कर लेता है अभी? सिनोसिटिक कंडीशन क्या कर लेता है अभी? अटेन कर लेगा. बट व्हाट हैपन इन अदर केस? डिप्लॉइड बनेगा स्पोर, मियोसिस शो करेगा. मियोसिस से क्या बनेंगे? 4 स्पोर्स बनेंगे. These spores beta they will show the mitosis and attaining multinucleate condition. They will forming a germ tube, and after the germination of germ tube they will form the vegetative thalli. और जो vegetative जो thalli जो होगा that will be the same as we have studied in our introductory session. That is, that will be the filamentous, that will be the aseptate, that will be the branched, and that will be the cynocytic. So in this way the life cycle of this particular genus, that is Mucor, is completed. So I hope you enjoy this particular lecture, and it will be beneficial for your completion of syllabus. Thank you very much.